Hare Krishna. So, last couple of verses, Krishna has been telling about the leeway. Raga Dvesha Vimuktaistu. That's what we saw in text 64. But a living entity should not be happy with this leeway. अरे भगवान ने ये अभी leeway दे दिया ना, चलो अभी enjoy करते हैं. No. राग द्वेष विमुक्तैस्तु विषयान इंद्रियैश्चरन्. It's a very tough concept. Krishna explains why this is tough. Krishna says, today's verse, 67th. Indriyanam hi charatam yanmano anuvidhiyate तदस्य हरति प्रज्ञार वायुर्नाव इवांभसी. Krishna says, as a strong wind sweeps away a boat on the water, even one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a mind's intelligence. So don't take this leeway to be a goody habit, my dear Arjuna. Nahi. Be always wary. Unless senses are fully subdued, they are like a venomous serpent. Taking to senses to find the leeway is like walking on a razor's edge. थोड़ा सा भी गलती हो गई, खून निकलेगा ही निकलेगा. आप उसे अवॉइड नहीं कर सकते. Krishna says that Indriyanam hi charatam. We have seen previously in text 64, Raga Dvesha Vimuktaistu Vishayan Indriyai Charan. So, Vishayan Indriyai Charan. Vishayas are roaming around the forest of enjoyment, but be free from Raga and Dvesha. What can happen? Oh, Indriyanam hi charatam yan manu anuvidhiyate. If the mind gets attached to them, which eventually it will, yan mano anuvidhiyate. Tasya harati pragya. If the intelligence is not sufficiently purified, the mind will drag the intelligence away. Yes, it is like a very simple principle. When we connect two water tanks, yes, so अगर इसमें पानी ज्यादा है, दोनों को कनेक्ट किया तो ये कम हो जाएगा या बढ़ेगा. अगर ऐसा है, इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इन दोनों को कनेक्ट किया, ये कम हो जाएगा या बढ़ेगा. दोनों सेम आ जाएंगे. उसी प्रकार से if mind is higher, intelligence is not sufficiently purified, you connect, mind will come down, intelligence will go up. Yes. Similarly, if mind is at higher plane, if mind is at a higher plane, yes, buddhi is low, what will happen? It is not a good way. जहां से जो भी ज्यादा है, अगर माइंड ज्यादा स्ट्रांग है तो माइंड बुद्धि को खींच के लेके जाएगा. अगर इंटेलिजेंस ज्यादा स्ट्रांग है तो ही इंटेलिजेंस माइंड को खींच के लेके जाएगा. सो अनलेस माइंड इज रियली प्यूरिफाइड, डोंट एट ऑल थिंक अबाउट द लीवे. व्हाई? वायुर नावम इव अंभसी. इन द ओशन you have to have a boat to cross over, but then the gust of wind helplessly makes the boat go hither and thither. The boat can sustain water, वो पानी को अंदर आने नहीं देगा, but then wind the boat can't sustain, उसको हिलना ही हिलना है. उसी प्रकार से अगर हम हमारी बुद्धि के स्तर पर ज्यादा प्रत्यक्ष रूपेण आसक्त नहीं है, इंद्रियों की आसक्तियों पर हम खींचे चले जाएंगे ही जाएंगे. डोंट टेक द लीवे वेरी सीरियसली. ऑल्दो आई हैव गिवन यू, बी वेरी केयरफुल. इट्स अ वेरी ट्रबल्ड पाथ. इट्स लाइक वॉकिंग ऑन अ रेजर्स एज. यू मे ब्लीड एनी टाइम, स्लाइटेस्ट मिस्टेक. So we see Prahlad Maharaj, he gives a very beautiful way to engage. Yes. He says,
9 ways in which we can engage in devotional service. Shravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padasevanam, Archanam, Vandanam, Dasyam, Sakhyam, Atmanivedanam, Iti Pumsarpita Vishnu, Bhaktische, Navalakshana. Yes. So, 9 various ways, 9 different limbs of devotional service. Shravan, to hear about the glories of the Lord and to hear about the glories of His devotees. Kirtanam, to chant the glories of the Lord and to chant the glories of His devotees. Vishnu Smaran, to think about, to remember the Lord. Padasevanam, to actually worship the lotus feet of the Lord. Archanam, deity worship, detailed. Vandanam, just to pay obeisances to the Lord. Dasyam, becoming a devotee of the Lord. Sakhyam, these are higher stages, becoming a friend. Atmanivedan, giving up everything for Krishna's pleasure. Iti pumsa arpita Vishnu bhaktische navalakshana. Whenever a devotee offers any of these limbs, one or any of these, he offers it to Vishnu, it becomes a limb of bhakti. So, better be engaged in limbs of bhakti than being engaged in controlled and regulated sense gratification. This is the essence. अपने मन को लीवे पे ज्यादा मत लेके जाओ, उससे ज्यादा अच्छा है इन नवविधा भक्ति में से किसी भी एक भक्ति का अंगीकार करो. We see Sita Maiya, when she saw the golden deer, she was so enamored by that golden deer. Yes. And Sita Maiya is the consort of Lord Ram, but still representing a living entity. Yes. Lakshman even says, "Arey my dear Maiya, भाभी गोल्डन डियर तो क्रिएशन में है ही नहीं, ये पक्का माया है, मैंने बनाया ही नहीं है, आएगा कैसे सामने?" लॉर्ड राम इस तटस्थ, वो बस देख रहे. सीता बोलती है, नहीं नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, मुझे चाहिए ही चाहिए. सो प्रभु रामचंद्र बोलते, ठीक है तुम्हें चाहिए ले लो, लेकिन अगर तुम्हें हिरण चाहिए तो तुम्हें मुझसे वियोग सहन करना पड़ेगा. Here Sita Maiya represents living entity. Lakshman represents Guru, who is telling the living entity, "Arey, this is illusion. Sita thinks by getting that golden deer she'll be happy." Similarly, living entity says, "By getting sense gratification I'll be happy." Guru says, "अरे बाबा, ये क्रिएशन में ही नहीं है, सेंस ग्रेटिफिकेशन करके कोई अब तक खुश हुआ ही नहीं है, तुम कैसे रहोगे?" Living entity says, "No, no, 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 oh my dear Lord, I want sense gratification." Lord Ram is tatastha. ठीक है, if you want sense gratification, you will have to bear with my separation. So Lord Ram leaves. Ultimately what happens? Sita Maiya does not get the Maya Hiran and she gets caught up by Ravan. उसी प्रकार से इंद्रिय भोग की आशा में, मनोभोग की आशा में गुरु के आशीर्वचनों को सुनते हुए भी जीव कहता है, नहीं भगवान मुझे भोग चाहिए. होता क्या है? न भोग मिलता है न भगवान मिलता है. यस, दिस शुड नॉट कम. ये नहीं होना चाहिए. इसीलिए डोंट टेक द लीवे सीरियसली, ऑल्दो आई हैव गिवन इट टू यू. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्ण. Krishna Krishna